शायरों के पास जाने का समय आ गया है। थोड़ा मूड को होता है। मेरे अंदर भी एक शायर होता था पहले छुपा हुआ। मैं बड़ी अच्छी शायरी लिखता था और बड़ी अप्रिशिएट होती थी। एसटीडी का बिल भी बचता था। वो चिट्ठी में आराम से चला जाता 15 पैसे के इंग्लैंड कार्ड में। फिर बाद में वो लड़की ने हाँ कर दी, उससे शादी हो गई तो शायद मर गए। Okay, so we move on to the next session, which is poetry. I would invite all the participants to please come on up first, and then one by one you can take podium, present to us what's on your minds. So, Deepshika Sharma first. Deepshika is Commissioner Income Tax and Member Advisory. She's a 2000 batch INS officer with a mission. Over the years, she has come a long way from the times when she wrote her first paper on feminism or tried to grapple with the women's question during the course of her film. Next, we have Vindhya Bedvicharan. Vindhya is a linguist. She knows 5 languages, an author, a poet, a social worker, a bibliotherapist, and an educationist. Welcome, Vindhya. Rujuta Deshmukh. An expertise in strategic communication and community empowerment. A published author, Rujuta penned the book Walk Till You Laugh. Anubha Srivastava. She is the principal in Edge International Dwarka, an ever-smiling face with a compassionate, poetic heart, professionally serving the children community heading a K-12 school in Delhi. I don't. Sorry, Daljit. I'm so sorry for the fumble. Daljit Singh, a published poet. In his own words, my love and passion for reading and writing inspired me to scatter my feelings on paper through words, which I did with the intimacy of Hindi and the beauty of Urdu in the form of my 2 books, Agaz and Parvaz. Okay, we start with you, Deepshika. How would we prefer? You would be there or you want to take the podium here? I think I'm good. Huh? Thank you so much. The title of my poem is I Hear You, because we are here on She Speaks, and this I wrote just today only for this very seminar that we are here. Just a brief intro first. Come here and sit before me. Tell me, where have you been? And I'll tell you I was there too. Tell me about yourself and I'll tell you I'm you, I'm us. I hear you. I don't know how it happened, that it was decided who would labor and earn, and who would labor and not earn. Great minds have already pondered, and activists have long waged a movement to get us here, to this seminar room. Will we take a strategic pause to dwell on inclusion, skill development, and entrepreneurship as she speaks her story? We are here to say, we hear you, girl. We hear your indomitable spirit, that cry you gave when you found yourself in the arena of not your doing, but still confronted with it. Beaten and down, I saw you, girl.
when you gathered yourself, chin up, and rose to walk on your path, one step at a time, but forward nevertheless. I hear you, girl, when you forbade yourself from taking two steps backwards. I was there, dear one, when you pushed yourself beyond the sphere of familiar and known into the fogged pathways to tread on the ones chartered to your inner compass. I saw you, girl, listening to all, but not giving them your power to hold you back, reining you in with invisible threads of belief systems. I hear you, girl, extricating yourself out of that web, exhausted but unrelenting. I saw you, girl, when you stepped aside out of your own way, when you realized that now it is you who holds herself back. I love you, girl, for now you speak in your voice to yourself and others. Thank you so much. I would like to request the next poet, Daljit Singh ji, please. दिल्ली के तो बहुत बोलो चलेगा। तो दरअसल क्या है कि दिल्ली में तो एक ऐसे जुबान है जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के शब्द और पंजाबी का तड़का एवरीथिंग। और सारा प्रोग्राम देखा मैंने तो बहुत अच्छा लगा। बात चल रही थी एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल्स की, तो नो डाउट लेडीज में थोड़ा ये चीज हम लोगों से थोड़ा ज़्यादा ही है। इसमें यूँ अपनी जस्टिफाई करूँगा बात को कि आप एक लेडी को चाहे 50,000 रुपये दे दीजिए चाहे 5,000 दीजिए, वो घर को नहीं बढ़िया तरीके से चलाएगी, बिकॉज इज अ बेस्ट एंटरप्रेन्योर। तो मैंने स्कूल में बेसिक्स पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, तो वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। दैट इज। और दूसरा स्किल पे आते हैं अगर हम, तो स्किल अगर मैं कभी शाम को किचन में घुस जाता हूँ हेल्प करने के लिए वाइफ की, तो वो एक बर्नर पे तवे पे रोटियां बन रही होती है, एक जगह कुकर सीटियां मार होते हैं, एक जगह कढ़ाई अगले की सब्जी बनाने के लिए खड़ी होती है, और साथ में क्योंकि वो पीजीडी केमिस्ट्री है तो उसके स्पीकर फोन मोबाइल पे सीबीएसई की वर्कशॉप भी चल रही होती है। जब मेरे को चक्कर आने शुरू होता है तो मैं बाहर निकल जाता हूँ, आई थिंक सर। और उसके बाद सर मैंने सर को भी सुना, मैंने सर को भी, तो कुछ बातें सारी बातें हमारी जो होती है। अच्छा बताना चाहूँगा कि लेडीज को एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल के लिए अगर अच्छे से पॉलिश किया जाए और मोटिवेट किया जाए तो बहुत बेटर रहती है। वो हमारा फाउंडेशन कर ही रही है, तो सो ग्लैड। हैट्स ऑफ टू श्वेता भलाई। बात आती सारी, अब बात आती है सारी की सारी थोड़ी सी मोटिवेशन पे और उम्मीदों पे, तो उसी पे मैंने कुछ लिखा है। तो सबके लिए यानी कि लेडीज के लिए, कभी कभी हमारे पर भी ऐसे वक्त आते हैं। उम्र के पड़ाव पर अगर कोई साथ नहीं, कभी कभी अकेले होते हैं। उम्र के पड़ाव पर अगर कोई साथ नहीं, अकेले ही चलेंगे, फिक्र की कोई बात नहीं। उम्र के पड़ाव पर अगर कोई साथ नहीं, अकेले ही चलेंगे, फिक्र की कोई बात नहीं। फिर होगी सुबह, फिर सूरज निकलेगा, फिर होगी सुबह, फिर सूरज निकलेगा, इंतजार कर लेंगे, इतनी भी लंबी रात नहीं। फिर होगी सुबह, फिर सूरज निकलेगा, इंतजार कर लेंगे, इतनी भी लंबी रात नहीं। मान लिया कि जिंदगी खेल है शतरंज का, मान लिया कि जिंदगी खेल है शतरंज का, एक प्यादे का गिर जाना, अगर एक ठोकर लग गया, एक प्यादे का गिर जाना होती शह और मार नहीं। मान लिया कि जिंदगी खेल है शतरंज का, एक प्यादे का गिर जाना होती शह और मार नहीं। अपने बाहु के बल से हम कायनात भी जीतेंगे, अपने बाहु के बल से हम कायनात भी जीतेंगे। जो हक है वो ले ही लेंगे मगर खैरात नहीं। जो लेंगे अपनी हिम्मत से लेंगे, अपने बाहु के बल से हम कायनात भी जीतेंगे।
जो हक है वो ले ही लेंगे, लेंगे मगर खैरात नहीं। ऐसा भी मुश्किल नहीं है, ऐसा भी मुश्किल नहीं है रब को हासिल कर लेना, ऐसा भी मुश्किल नहीं है रब को हासिल कर लेना। बस मुसलसल हो यकीन, मुसलसल सतत लगातार, मुसलसल हो यकीन और वो कोई सवालात नहीं। अगर आपने ईश्वर को पाना है तो यकीन होना चाहिए, वो एक सवाल कोई नहीं होना चाहिए भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मंदिर में रहते हो, मस्जिद में, नो नथिंग। रब का मतलब एक नाद है, एक जोत है, क्योंकि जिससे हम सब निकले और तो उसी में जाएंगे। तो उस रब को पाने के लिए ऐसा भी मुश्किल नहीं है रब को हासिल कर लेना, बस मुसलसल हो यकीन और वो कोई सवालात नहीं। दादी की कहानियों के भी होते थे बहुत मायने, सभी ने सुनी होगी, हमने हमारे में सुनी होगी, अब तक न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा होगी। दादी की कहानियों के भी होते हैं बहुत मायने, जो होती थी परियां में, जो होती थी परियां में, क्या होते थे जिन्नात नहीं। दादी की कहानियों के भी होते थे बहुत मायने, जो होती थी परियां में, क्या होते थे जिन्नात नहीं। जो लिखा है वही मिलेगा, मुकद्दरों की बात है, जो लिखा है वही मिलेगा, मुकद्दरों की बात है। हो सकता है तो बादल बहुत और बिल्कुल हो बरसात नहीं, तो डरने की नहीं है। तो बहुत ठीक है, मुकद्दरों में लिखा हो वही मिलेगा, उससे ऊपर भी नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा। जो लिखा है वही मिलेगा, मुकद्दरों की बात है। हो सकता है वो बादल बहुत और बिल्कुल हो बरसात नहीं। मतलब आखिरी शेर, पाँव रख जमीन पर, ये मेरा अपने लिए, पाँव रख जमीन पर जीत फक्र किस बात का, पाँव रख जमीन पर जीत फक्र किस बात का, नाम से जाना जाऊं अब इतनी भी औकात नहीं। पाँव रख जमीन पर जीत फक्र किस बात का, नाम से जाना जाऊं अब इतनी भी औकात नहीं। उम्र के पड़ाव पर अगर कोई साथ नहीं, अकेले ही चलेंगे, फिक्र की कोई बात नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। Good evening, Vinita ji and She Speak team. Thank you very much for giving me this opportunity to share my poem on this prestigious platform. So my poem, the name of the poem is Gulmohar's Friend. So this is the poem about a young girl Ganga and her transformation after realizing the hidden talent in her. So the Gulmohar tree, the poem is narrated by a tree, Gulmohar, which is situated at the courtyard of Ganga's maternal home. This poem, So this poem, Gulmohar's Friend, is emphasizing the importance of skill development and accessible education in rural India. And the background of the poem is this is our village where I was working, and I stayed at one of the Karyakarta's home, and this is my observation. So this is Gulmohar's Friend. I am narrating reading the poem from my book Walk Till Your Land. I saw Ganga coming from a long distance, walking behind one man. This man is her friend. My 18-year-old friend coming to her mother's home first time after marriage. Since her childhood, she liked my blooms, to catch my falling flowers and swing under my shade. What a significant change in her. She neither looked at my blooms nor collected my red flowers. She did not see the peeping moon through my leaves. Where is her innocent smile?
a curious smile, gentle sharing, and a heart full of love. Why did she stop talking to stars, tipping cars, and caring for all? One afternoon, she joined the bamboo basket making under my shadow, and as she used to do when she was here. Soon she joined the song of weavers. While weaving the basket, the beautifully crafted basket was ready soon. She kept it along with the other baskets. With utter satisfaction of creation, a beautiful smile spread over her face while giving a glance at her work. Next day, my friend left her mother's home. I was watching her, following him and carrying bamboo material over her head. She was walking with her skill, and I am sure her smile will always be on her face, and her lips will never forget the song of weaving. So that was more tree. He observed that how after getting the the knowledge, or after gaining the confidence of her skill, that confidence, she's now walking with that confidence, and she will never be sad or in her further life. So that was the poem. Thank you. Thank you. Hi. Hi, I'm Vidya. As you can see, I have planned to read a lot of poems from my book. And however, I wanted to start with, being She Speaks, being Amra Foundation, being Women Empowerment Forum, and discussing so many things. My first poem, the first chapter in my book is on an ode to women. So the first title is, Pursuing Perfection. Isn't that what we are all women trying to do? We try to be perfect in everything. So my question is, who are you? Dutiful wife, wonderful daughter, all-embracing mom, or just you yourself? Who are you? In being you, you find all. Pursuing perfection, in roles galore, you may find none at all. So, this is a question. My poetry is more of igniting the creative quotient to find your passion, which is something removed from your work. Let's not just get involved only in our professional, because it's not the job that ennobles us. It's we who ennoble our jobs. So we must, especially women, have some passion. So I'll go on to the next one. Like so many things were discussed. What Dr. Anand said, the atmosphere is very despondent, there is no solution, and we undergo our various emotional and professional turmoils. So, one way of looking at it as a young woman for me was like, I wear glasses since I was a kid. So, I colored my glasses pink. My pink glasses color my world delightfully, not letting minor impediments become big mountains. My pink glasses allow love to overflow, ignoring dirty devils residing inside and outside. My pink glasses cheer my heart. Singing in rhythm, dancing in abandon, my pink glasses bring me courage and joy. I shine and smile no matter what. My pink glasses color my life. I live in sync with myself above all. So it's just so important to, sometimes color your vision, because I think writers, leaders, Vinita here, so many people who have participated and joined and are listening, are participating. We are all thought leaders, and it's very important to also paint a beautiful world, because if we do not put positive seeds
If we are only talking about disunity and this religion and that problem, then we'll never be able to rise above that. So the last poem which I will share, which is talking about golden ratio. I mean, what's the golden ratio? Read about it when you want to. So we say, into the light we are born, into the light we disappear. The journey on this earth is that of shared humanity. Humanity must rise above only self into the expanded consciousness of the divine cosmic reality. So it's very important to go beyond the I, me, myself, work together for humanity, and to really plant seeds of the beautiful world we would like to see. So I would just like to end here. Thank you very much for inviting me. Namaskar everyone. I come from the school sector, multitasking and juggling, cooker and kadhai all together, and the CBSE workshop running alongside. So, and as a child, I remember we were talking about a question: how can we nurture entrepreneurship skill, financial management in youngsters, in children? Vinita ji, thank you for providing this moment to share. As a youngster, a young child, maybe a primary school child, is when I can remember. I remember my father, who was a sugar technologist, a chemical person, reciting poetry and Vedas on the dining table. So he would quote Bachchan ji, कविता से रोटी मैंने नहीं पाई है, कविता से रोटी तुम भी नहीं पाओगे, लेकिन कविता पढ़ोगे तो रोटी सलीके से खाओगे. And that somewhere I think sowed the seed of appreciation for words in me. I don't remember when the words were something which were more fascinating and a romance for me. I'll be sharing 3 small snippets covering 3 different topics. Beginning with the first one, titled Vijayadashmi, and you would be able to, I hope, relate multiple sentiments with it. एक रावण मेरे मन रहकर प्रत्येक मन की सीता हरता, करे प्रताड़ित मुस्कानों को नैनों की निश्चलता छलता. मन की नगरी की विस्तृतता में क्यों है एक नन्ही सी लंका, मन की नगरी की विस्तृतता में क्यों है एक नन्ही सी लंका, मुझको सुख से रह पाने को है पर्याप्त तनिक भर कुटिया. You're talking of sustainability on multiple platforms. मुझको सुख से रह पाने को है पर्याप्त तनिक भर कुटिया. व्यापक ये साम्राज्य संभालो, किस कांधे ये बोझ उठा लूं, किसको सौंपो राज्य भार और किस किसको मंत्री बना लूं, किसको सौंपो राज्य भार और किस किसको मंत्री बना लूं. राजन नाम कहाँ अब लाऊं, कहाँ खोज हनुमान अब पाऊं, जो फिर से विध्वंस मचा ले लंका से लंकेश मिटा ले. Now what comes important is लंका कौन है. रावण नाम कहाँ अब पाऊं, कहाँ खोज हनुमान अब लाऊं, जो फिर से विध्वंस मचा ले लंका से लंकेश मिटा ले. मैं ही सीता मैं ही रावण, मैं ही सीता मैं ही रावण, मैं ही कलुषित मैं ही पावन, मन ही लंका मन ही अयोध्या, नयन ज्योत में दर्शन छुपता. अश्वमेर से चरण पखारूं, राम भजो दिन रैन निखारूं, वृत्तक धारण से ये आशा, मन में जब जब उठे विपाशा, मन में जब जब उठे विपाशा, हे राजन इतना भर भर दो, रावण पर सीता प्रबल कर दो, रावण पर सीता प्रबल कर दो. She speaks, may the Sita be strong. Thank you. If someone may ask me what I am, I stand for the ethos of protecting, embracing, and living by nature. So, if you've given me this platform, I would definitely talk about a little bit about nature. And a couple of years back, when we were literally worried why there are no rains in Delhi,
I was sitting in my garden and a few words that came. बरस गया रे आस सजारे आओ बरसों मेघा प्यारे. बरस गया रे आस सजारे आओ बरसों मेघा प्यारे. ऐसा भी क्या घिर के आना बिन बरसे मुंह मोड़ के जाना. प्यासी धरती तरवर प्यारे हाथ जोड़ अब तुम्हें पुकारे. घन घन गोर रूप दिखलाओ रवि में विजय पात लहराओ. चन चन टप टप ताल मृदंगी अविरल कानों को सुनवाओ. पल्लव पल्लव आंचल सीले माटी मदक रंग में भीगे. धूल धूसरित जगती सारी मुंह तो अपना अंग निखारे. And I hope you all enjoy the beautiful leaves all around when after the rains. धूल धूसरित जगती सारी मुंह तो अपना अंग निखारे. धनुष ओट से बाहर झांके कीट पतंग मुख सब आके. अपनी अपनी धुन में ताने स्वागत की पंचम में गाएं. रूप तांडवी आ दिखलाओ जन जन को जयकारा पाओ. ओरे मेघा प्यारे मेघा कहाँ छुपे जग प्यारे मेघा. किस कर्मठता से था खारे कहाँ रुके विश्राम के मारे. न्योता भेजे रथ सजवाए कौन बेहद संदेश ले जाए. देश बताओ पता बताओ सागर मंथन फिर करवाओ. रूठ गए क्या मनुष्य कर्म से कौन जतन जो ताप मिटाओ. यज्ञ हवन के प्राण से मानो जन है जीवन प्राण ये मानो. ओरे मेघा प्यारे मेघा कहाँ छुपे जग न्यारे मेघा. Thank you so much. And since I'm the concluding one here, I assume, and when we say poetry, poetry has to have romance. And you can find the other elements alongside. So this is an ode to the romance, Tere Jaisa. Just a couple of lines. तेरे जैसा ही कोई ढूंढती हूँ कोई मिलता नहीं है. न वो लम्हे न वो जज्बा न वो आंसू न वो खुशियां. झगड़ना और मान जाना बिना रुके रुक जाना. फिदा तुम पे हैरान होना बुद्ध को तेरी खुदा माना. बुद्ध को तेरी खुदा माना. कहाँ खोई कहाँ फिसले साथ ही था चलते जाना. अकेले दिल मेरा लगता नहीं है तेरे जैसा कोई मिलता नहीं है. I guess we all change over time. तेरे जैसा भी कैसे ढूंढ लो अब तुम भी तो तुमसे जैसे अब नहीं रहे. तेरे जैसा ही कैसे ढूंढ लो अब तुम भी तो तुमसे अब कुछ कुछ नहीं हो. तेरे जैसा भी कैसे मुझको मिलता मैं भी तो अब मैं के जैसी ना रही हूँ. अजनबी से तेरे और मेरे मैं में और कभी भीड़ में रस्मों जहाँ की. तेरे जैसा ही फिर भी ढूंढती हूँ साथ तेरी ही कब से चल रही हूँ. Thank you so much. Thank you so much for sharing these beautiful lines with all of us.